करीब करीब 7 मिनट की दूरी पर, जहां से डिसेंट शुरू होना है, जहां से उस घड़ी की शुरुआत होगी जब हम लगभग 35 किलोमीटर की पेरिजी की ऊंचाई से हम उतरना शुरू करेंगे। जिन दर्शकों ने अब इस अभियान को शुरू से फॉलो नहीं किया है, उनकी जानकारी के लिए संक्षेप में बता दूं कि प्रक्षेपण के पश्चात 24, 25, 29 जुलाई और 6-8 अगस्त को पृथ्वी की कक्षा में 5 मैन्यूअर्स किए गए, जिसमें तकरीबन 508.4 किलोग्राम प्रणोदक का कुल 3604.254 सेकंड तक प्रज्वलित कर कक्षीय परिवर्तन किया गया, जहां कक्षा उत्थान किया गया। इसके पश्चात 13 अगस्त को ट्रांस लूनर इंजेक्शन TLI के दौरान 166.8 किलोग्राम प्रणोदक की खपत कर 158.309 मीटर प्रति सेकंड की वेग वृद्धि की गई और चंद्रयान 2 को पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा में स्थानांतरित कर दिया गया। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर मिशन के लंबे अतिपर्वणीय पथ पर एक ऐसा बिंदु आता है जो चंद्रमा के प्रभाव क्षेत्र के अंदर होता है। इसे लूनर ऑर्बिटल इंसर्शन या LOI कहते हैं और इसी बिंदु पर भू आदेश के द्वारा कक्षा की दिशा में परिवर्तन कर उसे चंद्रमा की दीर्घवृत्तीय कक्षा में पहुंचा दिया जाता है। फिर 20, 21, 28, 30 अगस्त और 1 सितंबर को 745.04 किलोग्राम प्रणोदक को कुल 4422.809 सेकंड तक प्रज्वलित कर चंद्रमा की निम्न कक्षा में प्रवेश करा दिया गया। इस समय पेरिलून लगभग 120.5 किलोमीटर और एपोलून 126.1 किलोमीटर प्राप्त कर लिया गया है। आप अपने स्क्रीन पर इसरो उपग्रह केंद्र के UR राव उपग्रह केंद्र के विभिन्न वरिष्ठ वैज्ञानिकों का बड़ी बारीकी से अध्ययन करते हुए देख पा रहे हैं, क्योंकि इस समय हम केवल 5 मिनट की दूरी पर हैं और हर छोटी बड़ी घटनाएं जो भी इस समय लगातार घट रही हैं उनका बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है। और जिस समय हम करीब 1:38 सुबह के हम चंद्रमा के उस बिंदु पे पहुंचेंगे जहां ऊंचाई करीब 35 किलोमीटर होगी, उसी क्षण में ऑर्बिटर भी जो होगा वो बिल्कुल उपग्रह के ऊपर होगा, इस तरह से ताकि हम उसके चित्र प्राप्त कर सकें। So minus 3 minutes 53 seconds before we start the power descent operation. Just to give a quick update on the way the total power descent operation for the Vikram lander would be carried out. The descent operation would, as you can see on the screen, we are at 3 minutes to go before we start these operations. So Vikram lander would commence from an altitude of 30 kilometers, and once this descent operation has started, it will be for a duration of nearly 15 minutes before it touches down on the lunar surface. And the Vikram landing sequence is achieved through an autonomous landing sequencer. And just to give an update, the final state vectors and other parameters have already been loaded into the Vikram lander 4 hours prior, so it's all ready to go and start its operations. So as per the power descent plan, it's expected to start at 1 hour 38 minutes Indian Standard Time. As I mentioned, we are just less than 3 minutes now, and this entire power descent operation will be carried out in 4 different phases of operation, namely the first phase, which is the phase referred as rough braking phase, will bring the spacecraft from 30 kilometers to an altitude of almost 7.4 kilometers. The second phase after the rough braking phase will be attitude and absolute navigation control phase, which will enable the spacecraft to travel from 7.4 to 5 kilometers. And then immediately we will have the third phase of operation, which is the fine braking phase, where we bring down the spacecraft from 5 kilometers to almost at an altitude of 400 meters above the surface where the landing is supposed to happen. And eventually from 400 kilometers, the spacecraft will not have any forward moving velocity. It will be only used to have a vertical descent for a touchdown. So the final phase of operation after the fine braking phase will be the terminal descent phase, where the Vikram lander will be brought from an altitude of 400 meters to 100 meters to 60 meters to 10 meters and finally the touchdown. So as we go through these operations, as I mentioned, it will be a 15 minutes of descent operation. Once the activity is initiated, we will be bringing you some of the flight parameters and the status, how the total operations are going on. So each of these phases during the power descent
are very critical and important in its own way, as it has a very specific objective and the goals to be achieved during the entire phase of operations. So maybe another 1 minute, 19 seconds to go. The further update as far as the descent operation is concerned, the Vikram lander has 4 main propulsion engines, each generating a thrust of nearly 800 newtons. And out of these 5 main engines, the 4 engines are throttleable liquid engines, which means we will be able to regulate the thrust of the engine, increasing the speed or decreasing the speed of the engine to achieve the required deboost velocity. Another 48 seconds to go before this deboost or firing of the engines. The 4 thruster engine, throttleable engines are carried out. जी हाँ, थोड़े तनाव भरे क्षण जरूर हैं क्योंकि हम बेहद करीब 32 सेकंड के जब विक्रम को धीरे धीरे उतारा जाएगा नीचे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि कैसे उतरते समय उसके वेग मान को कम किया जा सके, जिसे हम रफ ब्रेकिंग फेज कह सकते हैं। और इस रफ ब्रेकिंग फेज के दौरान हम जो उसमें लगे हुए 8 थ्रॉटलेबल इंजन हैं, जिससे उसके प्रणोद बल को कम किया जा सकेगा। ऐसे 4 इंजन 4 कॉर्नर पे लगे हुए हैं, 4 कोनों पे लगे हुए हैं, और ऐसा ही एक 800 न्यूटन का इंजन जो है बीच में लगा हुआ। और बिल्कुल हम करीब, इस समय विक्रम डिसेंट के स्टार्ट कर दिया गया है, और रफ ब्रेकिंग जो वो है घड़ी है, वो बहुत ही नज़दीक होगी। इस समय हम धीरे धीरे अब उसकी गति को कम करना शुरू करेंगे। Yes, the descent phase of operation for the Vikram lander has just been initiated with the firing of the 4 liquid engines, which I was mentioning, the 4 throttleable engines. The activity has just started, and right now we are at 35 seconds since the engines have fired. And just to give an update, the Vikram lander, when it was in an orbit of around 30 kilometers, when the descent operation started, it had a velocity of nearly 1640 meter per second. So what we are going to do through this entire phase of 15 minutes of operation, when the power descent will be done, is to make this orbital velocity of the Vikram lander from 1640 meter per second to almost 0 meter per second, so that the spacecraft could land on the surface of the moon. So the activity has just initiated. As you can see on your screen, the view of the Mission Control Center, with Chairman Isro and Director of URSC, and Dr. Suresh briefing the Honorable Prime Minister about the flight event that are going on. So the time elapsed is almost 1 minute 28 seconds. जी हाँ, धीरे धीरे गति कम होती हुई 1507 मीटर प्रति सेकंड हो चुकी है, जबकि हमने 1630 मीटर प्रति सेकंड की गति से प्रारंभ किया था। और हर घड़ी की, हर क्षण की जो जानकारी है वो प्रधानमंत्री को पहुंचाई जा रही है। और इस समय हम करीब 1 मिनट 52 सेकंड का समय व्यतीत कर चुके हैं, और वेगमान लगातार घटता हुआ। और यही उद्देश्य भी हमारा है कि धीरे धीरे जो रफ ब्रेकिंग है उसके दौरान चारों जो इंजन हैं, उन चारों 800 न्यूटन वाले इंजन जो भारत ने पहली बार विकसित किए हैं, ये पूरी जो प्रणोद प्रणाली है ये पहली बार विकसित की गई है, और इस प्रणाली के चारों इंजन लगातार फायर करते हुए, प्रज्वलित होते हुए और लगातार वेगमान घटता हुआ। So almost 2 minutes 20 seconds, and we expect this rough braking phase, which was just initiated, to last for nearly 10 minutes, during which time the velocity, the orbital velocity which the Vikram lander possessed of the order of 1640 meter per second should reach to something like 140 meter per second at the end of the rough braking phase. So basically during this phase it's a real brute force of operation, where we are trying to kill the velocity which the spacecraft currently has, making it revolve around the moon with an orbital altitude of 30 by 100 kilometers. So I am seeing on my screen that the velocity from 1680 meter per second has come down to almost 1300, so nearly 350 meter per second velocity for the Vikram lander has been reduced. 3 minutes have elapsed, and maybe another next 7 minutes we should have quite a substantial reduction in the velocity to ensure that at touchdown we have almost near 0 meter per second velocity, to ensure that the Vikram lander has a soft landing
on the surface of the moon at the very desired landing site location. So we are right now in the rough braking phase of operation, nearing 3 minutes 39 or 40 seconds, and almost I would say 480 meter per second velocity has been reduced, which is clear indication that the entire operations during which the 4 throttleable engines are being fired has been performing absolutely nominally, and the reduction in the velocity and the down range, the range it has to, after the descent operation has started, it has to cross almost a range of 600 kilometers before it lands at a predefined destination. So I am seeing a very close match with the pre-flight and the flight prediction. The velocity of the Vikram lander has come very close to 1100 meter per second. So almost to 500 meter per second velocity reduction has happened in just 4 minutes. So another 6 minutes to go before we reach in the mission objectives of the rough braking phase. जी हाँ, करीब करीब 6 मिनट का समय 4 मिनट का समय व्यतीत हो गया है। 6 मिनट लगभग और वेगमान कम करने के लिए लगेंगे। इस समय करीब करीब जो सारी गतिविधियां हैं, सारी प्रणालियां हैं, वो अभीष्ट रूप से चल रही हैं। इस अवतरण को सुरक्षित और कोमल या सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग बनाने के लिए अनेक अभिकल्पनाओं पर विस्तृत चर्चा और गहन अध्ययन के पश्चात ही विशेषज्ञों ने अनुमति प्रदान की थी। इसरो के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसरो ये पहली बार करने जा रहा है। इसके लिए प्रोपल्सन, ऑनबोर्ड कंप्यूटर, सेंसर्स, स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म, थर्मल जैसी अनेक प्रणालियों के उचित सामंजस्य से ये सब कुछ संभव हो सकेगा। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सारी गतिविधियां स्वचालित रूप से चल रही हैं। इस दौरान लैंडर में लगे अनेक संसूचक जरूरत के अनुसार आंकड़े उपलब्ध करा रहे हैं और ऑनबोर्ड कंप्यूटर उचित गणना के आधार पर यथोचित निर्णय लेकर लैंडर को चंद्रमा की तरफ उतरने में सहायक सिद्ध हो रहा है। करीब करीब 939 मीटर प्रति सेकंड का वेग हम प्राप्त कर चुके हैं। लगभग अगर हम बात करें तो करीब करीब 700 मीटर प्रति सेकंड का वेग हम घटा चुके हैं। इसलिए हम ये बड़े कॉन्फिडेंस से, आत्मविश्वास से कह सकते हैं कि हमारी जो ये प्रणोदक प्रणाली है, प्रोपल्सन सिस्टम है, ये बड़े ही सुचारू रूप से गतिविधियां अपना निष्पादन दे रहा है। इस समय हम करीब करीब 6 मिनट व्यतीत कर चुके हैं और आने वाले 4 और मिनट में हम लगभग जो इसका क्षैतिज मान है वो हम काफ़ी कम कर पाएंगे। करीब करीब शून्य के बराबर, लगभग 140 मीटर प्रति सेकंड रह जाएगा। So almost 6 minutes have elapsed since we started the power descent operation, and we are still in the rough braking phase with the next 4 minutes to go. And if I look at the velocity that has dropped from the time the power descent operation was initiated, nearly 50% of the orbital velocity has been reduced. So we started with 1680 meter per second. Presently, the Vikram lander is descending towards the lunar surface, and it has a velocity of 760. So we expect in the next 3 minutes, the velocity should come down to something like 146. So on your screen, you can see the plot where we have on the x-axis the downrange, and on the y-axis is the altitude. So I think altitude has Alok has come down quite substantially now. We are almost maybe in the range of 10 to 20 kilometers. And velocity also is, yeah, I think maybe. So a very close match with respect to the pre-flight predictions, and which clearly indicates the 4 throttleable steering engines, which has been basically designed for this Vikram lander for the first time, has been performing extremely well. And as per the plan, the timeline is going very precisely, 7 minutes 34 seconds, so maybe another 2.5 minutes to go, and we have almost touched the 630 meter per second. So maybe another 500 meter per second velocity is what we expect to get it reduced. At the same time, if you look at the downrange, it has traveled quite close to the landing site now. Just we are maybe 75 kilometers away from the actual landing site. When the maneuver was initiated, we were almost 600 plus kilometers, and yeah, and quite a velocity, and I think it has been getting reduced quite substantially. The one thing I would like to just mention here, during the descent phase of operation, as I mentioned, the rough braking phase is the real brute force of velocity reduction, and since we are trying to bring an object from an orbiting around the lunar surface to have a touchdown,
there is a need for us to reduce the velocity. It's something like braking, and quite eventually the job is being done now. Maybe it's around 450 meter per second, and another 2 minutes plus to go. In fact, I think when we reach an altitude of almost, the target for this particular rough braking phase is to attain an altitude of 7.4 kilometers, when the velocity should have touched almost 146. So maybe another nearly 2 minutes, maybe 1 minute to go. जी हाँ, लगभग एक मिनट की दूरी पर हम लोग करीब जो लैंडिंग साइट है उससे करीब 50-60 किलोमीटर की दूरी पर होंगे, और जो ऊंचाई है वो भी करीब 10 किलोमीटर बच गई है, और इस समय जो वेगमान है वो भी करीब 376 मीटर प्रति सेकंड है। इसे और भी कम करना होगा, इसलिए जो चारों इंजन हैं वो भी अभी तक प्रज्वलित हैं। हम करीब 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब पहुंचेंगे उस समय जो एब्सोल्यूट नेविगेशन फेज है वो शुरू कर दिया जाएगा, और ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस समय जो लैंडर है वो थोड़ा सा अपने अक्ष से झुका हुआ होगा, और लगातार इस समय हम सारे वैज्ञानिक, आप अगर देख पा रहे होंगे, 73.3 वर्टिकल वेलोसिटी, और डाउन रेंज जो है करीब 18 किलोमीटर हम दूर पर हैं लैंडिंग साइट से, और इस समय जो इमेजर है उसका डेटा भी डाउनलोड हो रहा है। कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो भी बाकायदा ऑन हो चुके हैं। इस समय आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हर वैज्ञानिक लगातार छोटे आंकड़ों पर नजर बनाए हुए है, और आप सुन पा रहे थे तालियों की गड़गड़ाहट के साथ 210 मीटर प्रति सेकंड की जो वेगमान है वो कर लिया गया है, और रफ ब्रेकिंग सिस्टम जो है, रफ ब्रेकिंग जो फेज था वो लगभग अपने अंतिम दौर पे। It's finished. So we have finished the rough braking phase now, because the target for that was 7.4 kilometers and the velocity was nearly 140. So the Vikram lander has successfully completed the rough braking phase, and now we have entered the next phase of operation, which is the absolute navigation or attitude control phase. And this particular event is going to last for nearly 38 seconds. And the 4 throttleable engines are continuously on, and we see the velocity is something like 86 meter per second, and roughly 4.43 kilometers away from the landing site. So all going well. Just awaiting the announcement for completing. Yes, the rough braking phase has been successfully completed, and we have entered the next phase of braking operation, which is the fine braking start, which is going to basically commence from 5 kilometer altitude, and this particular operation is going to last for nearly 96 seconds, wherein the Vikram lander will be reaching an altitude of just 400 meters above the landing site for initiating the vertical descent operations. So we are almost 11 minutes 52 seconds after the descent operation has started, just awaiting the announcement for the end of fine braking phase. Maybe in another few seconds we should hear the announcement that the fine braking phase of operation has been completed, and we expect at the end of this the vehicle to reach an altitude of almost 400 meters. And the velocity right now, if you look at the plot, we have the Vikram lander has a horizontal velocity of nearly 48 meters and vertical velocity of 60 meter per second. जी हाँ, करीब 12 मिनट 30 सेकंड का समय व्यतीत हो चुका है। हम लोग काफ़ी नज़दीक चंद्रमा की सतह पर, और फाइन ब्रेकिंग जो एंड वो है फेज़ है वो लगभग ख़त्म होने की स्थिति में। Just waiting for the confirmation for the fine braking end. तनाव भरे क्षण होते हैं जब इस तरह की कोई भी घटना के हम बहुत ही करीब होते हैं, क्योंकि वर्टिकल डिसेंट स्टार्ट होने वाला है। इसमें सारे संसूचक जो हैं वो लगातार अपनी गतिविधियां प्रदान कर रहे हैं। After the completion of the fine braking end, we will have the vertical descent operations, where the
the spacecraft will be moved from nearly 400 to 700 kilometers down to the lunar surface. GCS-70. Confirm the करीब parameters of 13 मिनट 48 सेकंड व्यतीत हो चुके हैं और एल्टीट्यूड जो है वो लगातार कम होता हुआ We're just waiting for the confirmation. The spacecraft, as we see on the screen, is showing the horizontal and vertical velocity of nearly 48 and 59 meter per second. थोड़े से क्षण जहां पे हमें आंकड़ों की प्राप्ति के लिए इंतज़ार करना पड़ रहा है जैसे ही आंकड़े प्राप्त होते हैं हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे Confirm any signal from station. stand by. Negative. No signal from Madrid. It's view of the mission control center. सभी के चेहरों पर थोड़े तनाव के क्षण शायद आंकड़ों के निश्चितता के लिए हमें थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी Once we have the updates from the mission control room, we will come back to you. So we're just awaiting for the लगभग राधाकृष्ण जी 16 मिनट 12 सेकंड बीत गए हैं और जो वेगमान है वो 48 और 59 ही दिखा रहा है तो हम अभी आंकड़ों की पुष्टि के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे OD Vikram, confirm station configuration for receiving both S-band and X-band are configured. That's affirmative. We are not receiving from Madrid, HBK and Mauritius. we are just awaiting for the updates from the mission control room. So please stand by. लगभग 17 मिनट 38 सेकंड व्यतीत हो चुके हैं और जब तक आंकड़े सामने नहीं आ जाते कुछ कहना मुश्किल है सभी वैज्ञानिक अपने कंसोल पर कंप्यूटर पर आंकड़ों का अध्ययन करते हुए ताकि किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके
So view of the mission control center. हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके चेहरे पर भी उत्सुकता या आंकड़ों का इंतज़ार बिल्कुल साफ दिखाई पड़ा और मिशन के वैज्ञानिक आपसी डिस्कशन के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकेगा। ये जो आप ग्राफ अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये विक्रम डिसेंट ट्रेजेक्ट्री है। कैसे किस तरह से जो वर्टिकल एल्टीट्यूड था, जो ऊंचाई थी वो, और आंकड़े नीचे प्राप्त हुए, उसके बारे में। So Chairman Isro just giving briefing to the Honorable Prime Minister of India. So looks like they are just looking at the flight data. All subsystems MD, orbiter operations are on. In fact, at the end of the fine braking phase, the Vikram lander should have been at an altitude of almost nearly 400 meters. And if you look at the plots, we are seeing that it has most reached close to a kilometer from the landing site. हम लोग लैंडिंग साइट के बेहद करीब पहुंच गए हैं। शायद इसरो के चेयरमैन ने प्रधानमंत्री को कुछ संदेश दिया। प्रधानमंत्री जी धीरे धीरे अब कक्ष से नीचे आते हुए, आप जल्दी ही किसी भी घोषणा की उम्मीद कर सकते हैं। कुछ ही क्षणों में हम जो आंकड़ों को अध्ययन के बाद जो भी निष्कर्ष होगा उस तक पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री जी धीरे धीरे अपने कक्ष से नीचे उतर के नीचे आते हुए। We're just awaiting the
to be in your seat, please.
RF orbiter confirm. SSR is receiving data. RF to confirm. Does it mean lander is, orbiter communication is on? Noted.